Hello, everyone. This is HornbillTV laga Morning Pulse Bulletin. Ajila laga khobor eniga channel dia se. Non-local manubra fraud kurina state mati loi thaka laga ilzam dangor ekta ulai se. Bishi dangor khulasa ekta de Dimapur Naga Students Union bra Wednesday allege kurishi ki ekjon Nirmal Jain koina thaka bra Dimapur mati khan illegal tarika bra kinina ase. Aru tai indigenous certificate bi illegal bra banai gina ase. Itu ekla nohoina tai tik na hua bishi transaction bi kuria jani paise. Taken lode itu opor kafi sabuda se koina DNS vibra gushe taken itu opor taike kutha kuria homoy Nirmal Jain kwa manudo gushe tai high profile manu bishi lode connection ase. Union bra itu gushe taken kanun nijor laga hate nalobo kintu Thursday de taken DC Dimapur lode state government ke chitti likhina itu mamla opor bhal bra investigation jabole mangi bola ase. Chinta dikhaina DNS vibra politicians, bureaucrats, naga political workers aru leaders khange inika manuke support nohoile bi napajabi kushe. I bido opor DNS vibra press conference tiare details janibo. Good evening, everyone. Thank you, media fraternity, for turning up in such a short notice. The office of the Dimapur Naga Students Union has convened this press conference to address a matter of serious concern, which directly affects the rights and the future of the Nagas, which is the illegal occupation of land by non-locals individuals using fraudulent documents. The office has undertaken internal Phek findings, and we possess credible and documentation and proof of these unlawful activities. We want to be very clear, and please be reminded that we are not against the non-local communities who are doing business here and living peacefully within our state. However, we strongly oppose those individuals who comes in the guise of doing business and earning a livelihood in our state and engage in illegal activities like the illegal occupation of land. One such case involves Mr. Nirmal Jain, who has illegally procured land and illegally procured an indigenous certificate. He claims that he is a genuine citizen, genuine indigenous of Nagaland. However, the proof and evidences which we have in our office speaks otherwise. Subsequently, he has purchased land and engaged in multiple transactions which he is not legally entitled to undertake. The DNSU has gathered sufficient evidence in this matter, and we are bringing this into the public attention not because of biasness or hatred towards anybody, but to protect the rights and the land of the Nagas. Let it be known that the office of the Dimapur Naga Students Union will not be taking law into our own hands. We will be officially submitting a letter to the government through the Deputy Commissioner of Dimapur tomorrow and urge the government to initiate a thorough investigation and take proper legal action against the culprit. Furthermore, we also appeal to our politicians, to our bureaucrats, to our Naga national workers and influential Naga people not to support and not to shield such individuals. Let the law take its own course of action. We do know and understand the level of influence such person has in our state. He is someone who boldly declares that he is closely connected with the politicians, with the bureaucrats, and all these things. But the rights of the indigenous people cannot and should not be compromised under any circumstances. The office of the Dimapur Naga Students Union remains committed to safeguarding the interests of the Naga people and will continue to be a voice against any injustice in all forms. That's from my part. I would like to give time to our colleagues and
President to highlight in detail. Oh, thank you, yes. The gist of the issue regarding today's press conference has been clearly explained by RGS. However, I would also like to add some points. Nagamanukanto Article 371A protect explicitly protects non-locals from exploiting us. Regarding the ownership of land also, this means that non-locals are legally prohibited from purchasing lands within Nagaland. Any transaction that attempts to bypass or violate these protections, including through proxy ownership or the fraudulent use of indigenous certificates, is illegal, null, and void, and will be challenged. On May 29, DNSU also gave a press release regarding this. Manu non-locals can be fraudulent means para inia kurina mati kini gena buhi ase aru itu ekla noruina tai khan la bitor de transaction kuri ase aru itia this particular name Nirmal Jain tai illegally fraudulent means para indigenous certificate loi gena ase aru he is one land mafia na line mafia ko tai ini mati laga pata khan bi tai temper kuri gena bikiri kurubo manu non indigenous manu khan ode bikiri kurubo inia kuri gena ahi ase tai tu le tu 2002 de indigenous certificate banai na ase itu bi ma khan GS par coalition we have compelling evidence to show that tai tu le tu hosal non indigenous na hoy tai 1980s de dimapur de ahala ase kuine man itu khan khobor pura evidence pura ase man lode aru tai tu le tu man tai ke office de bi jaine lok paise yete bi aise ina une tai tu le tu mo fitani para ko ase mo tu le tu dangor manu khan ke jane ase like under naga political groups khan ke bi dangor manu khan ke jane ase government te ulwi dangor manu khan ke jane ase kuine imam fitani para bi mahan ke ina bi ko ise dong mahan tu le tu we will, like we said, will let the law takes its own course of actions, but the government should take and initiate strict action, investigate kuro lage kuine mahan tu itu government ke mani ase. The office of the Dimapur Naga Student Union, we have studied, we have thoroughly discussed, we have intensive research, and we found that Nirmal Jain is no other than a land mafia in Dimapur, associated with some high-profile people in Nagaland. And we are also shocked to see that he had already acquired buildings and properties in and around Dimapur in someone names. So, if the government of today can evict the land encroachment in airport Dimapur, then the government has the right to seize the property of Nirmal Jain under the Article 371A, ownership and transferring of land and its resources, preserving the traditional rights of the Naga people. And the very land of the Nirmal Jain can be used as a public property or for development purpose. Thank you. Regarding this issue, we had a presidential meeting on 31st this month, Saturday, the presidential meeting. So we saw the constitute units, the president, the GS, we will thoroughly discuss it. We saw one week with Ekjun Manubra, Bahala Manu Ekjun Bra, Jarta, Pasta Plus properties in our Dushan being the same follow protection, mana future generation to key inherit grow. Mana future generation of Bachan Gareto Matido Natagao. Aro itu one of the biggest crime must say. Law legally law there is different anyway. Fraud documents try to banayena, manuke fool kurigena, and I'm sure government officials so you all the big shots can be involved as it. In a time, some of the tie up in a guru parise. So the Dimapur Naga Student Union, we seek one
we seek the public support also. Kena mane Marikla prato voice put hayu kamne. Man note 12 tribes ase. DNS under DNS 12 tribes ase. So man probably to fight ko bole lage. Ito don't take na ina ko na. We have man decision to ase. Ito ane man urge kore. Public kimi man I just fight to strong from man ke support ko diyo ko na urge kore. The involvement of non-locals in buying and selling tribal land is highly sensitive and often a controversial issue. It typically involves legal, historical, and ethical concern, especially with regards to tribal sovereignty, land rights, and exploitation. At the end, the government officials should also be questionable as of how these things have turned this ugly. Nagaland State Limited ekta bishi broad kobore Havildar Wabang Marin Pom Shillong Meghalaya de Assam Rifles State Service kuri thaka chintaban ase aro dai Governors Gold Medal 2025 do baishe dalaga duty day dedication come day efficiency aro young personnel kan inspire kuri thaka ane dai Lungleng district laga Yongimchin village rase middle class family brahina 22 years bra Assam Rifles State serve kuri ase dai logo duty logo dai golf debi interest loina Assam Rifles golf course Shillong de instructor hisab debi kam kuri ase Governors Gold Medal ekta nohina tai dusra recognition bi paishe 2022 de Shillong de North East Olympic Games de Nagaland represent gurishe 2024 de Governors Cup Award pi Shillong de paishe Meghalaya Governors House de golf course set up kurle pi tai role loise aru golf de involvement karne state level de alag award pi paishe Nagaland de golf itabi bishi popular na thaka karne Havildar Pombra bishi challenge face kurishe state represent kurle karne Nagaland Proper Golf Association nataka karne starting to support public dictar hoise ulibi tai laga senior officer kan aru state level intervention thaka karne tai last day Nagaland represent kole parishe Meghalaya de tai laga recognition pa pra dikhaise ki Nagaland prabi manukan bahar state thagina bhal gam grese aru itubi dikhaise ki inika sports especially golf chundu region de develop hoise tai kan karne structured support laga bishi dorgar ase Central Board of Secondary Education bra class 10 exams due ahasal 2026 bra do sal de dripar lobo koina janedishe official hisab de exam laga first phase to February de tagibo kundu class 10 students kan gani mandatory hobo enika hoina second phase to May de tagibo kundu students kan gani optional hobo taiken laga performance improve korbele gani nimite academic session laga homoide internal assessment do ekbar tagibo norms laga hisab de winter bound school laga class 10 kan garne to board exams dibole garne khushi face choose korle parabo CBSE bra norms laga draft to February moina de janai dishe kindu stakeholders laga feedback karne public domain de rakishe Kali Zanipoto DC Conference Hall de Samvidhan Hatya Diwas rakhiche etu tindo agire Prime Minister thagya Indira Kanti bra 50 sal agire country de national emergency lagai dia khilaf kura la ase keynote address dia humai Zanipoto Government College laga assistant professor Nisana T Jimo Pragushe June 1975 ra March 1977 tak Indira Kanti bra emergency thaliado India laga democratic history de sabse andhera humai ekta mani Major Praveen Solotra 11th Battalion Assam Rifles laga RO in charge kun special guest ahishe Daibra Manukange emergency la opor changari guna ahya din kande inika galti na kurle lagya gushe ekta strong economy aru knowledge thagabra society ge develop kra guna ahina thaga manukange education aru economic empowerment de focus kurbi gushe event de ESC Zuchibemo Izungbra chair gurishe ESCP Wedie Theriabra Manukange swagat gurishe cornerstone guys kan bra kana kaidishe aru ESC Amerbra thanks janadishe declared first in 1962 during the Indo-China War on the grounds of external aggression. Following that, it was declared again in 1971 during this Indo-Pakistan War on grounds of war, and following this 1975 emergency declaration was declared on 25th of June 1975 on grounds of
young soil, right? The part of the eastern Himalayas, right? So with technology, we need to submit some good projects so that we can push for development. Thank you, sir, very much for inviting me. Jai Hind, Jai Bharat. Zenibodode District Administration bra Eagle Crest Training Academy and Consultancy lo milina acting kane skill development program dur thagishe multi-purpose hall de itulaga program de Kukhatuli Yeptomi bra chair guridishe aru Zenibode ESC NCS L Chinglem Konya bra Eagle Crest ke acknowledge kurishe India aru abroad duita debi alag field kane career guidance de dianimide ESC bra gushe du edu Eagle Crest tu Nagaland de sabse leading training center ase Inia huna Zuniboto Range Students Union laga General Secretary Holonto K Jumomi bra Sumi Youth Organization laga naam de jama kurina thagya manukon ge encourage kurishe Ito consultancy private consultancy ase top consultancy firm Nagaland since when is it 2010 18 ba shuru kurina Nagaland to ekdam famous laga na aro individuals kan students kan ke youth kan ke kam dia tane bishi to moham college ta ham program da ai dino bolas na initiative ekdam hoy private as well tahan gani lab gani kure as belibi at same time job bi dia so it don't ekdam significant aha to amnat ke seriously lo lagi to whereas last year I see ekdam bra last year aha to town hall we did there last year resource person do that in our students kan be inwa bi jama kure ekdam bhalbara takhan learn na tam organization satisfactory top te this time no students and mato lagi samal college students and secondary students mostly to bacha khan ge skill development ko islam na kucho so on the verge of graduation no be job market ko kucho laga time de tik to dia bola sede olibi summer vacation lok pai ido ne achi to manu man nai olibi nada ke libi alop kiman jama kore 20 tradition jama kore ase learn kore action by learn kore ar profit pai shilo sob se na kata ido hobode the first opening remarks ko ase CSOs de man na olibi GB special thanks dia ase mogan program de pula banai shilo libi aji na kumbi agan bi amne an gani ase mobilize kora gani students union kan mogan program kiman banai shilo libi amnan cooperate kora shilo to iku kam na to na mogan organize ko shilo libi manu tania to amne ne asu to tania na shilo to mogan kam na ido ne mogan kiman puisa phelai gena jaga bisari gena ki banai shilo libi amne an Olop din agide France bra Mikey ekjun India de advertisement shoot korobole karne ahya talaga team member ekjun bra sexually assault kurishe guna janibaishe itu laga oborde case register kurishe aro accused Siddharth kun itu homoy bra luina tagishe taige Wednesday din de turishe guna Uttaipur SP Yogesh Koyal bra gushe कोई एक रात्रि को एक घटना हुई जिसमें एक फ्रेंच महिला जो यहाँ पर किसी विज्ञापन की शूटिंग में आई हुई थी उनके साथ उन्हीं के शूटिंग टीम के एक सदस्य के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया 23 तारीख को पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस की जो सभी टीम थी सक्रिय हुई और उस महिला की रिपोर्ट के ऊपर थाना बड़गांव पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। महिला के स्टेटमेंट लिए गए। आज उनके कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट कराए गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी अनुसार यह महिला 22 तारीख को ही उदयपुर आई थी और यह वीवो का एक मोबाइल का एक एड शूट था, उस शूट के सिलसिले में यहाँ थी। 22 तारीख को इनके द्वारा पिछोला के नज़दीक अमरई और आसपास के रेस्टोरेंट्स में शूटिंग की गई। सज्जनगढ़ फोर्ट पर इसकी शूटिंग हुई। तत्पश्चात रात्रि को जो क्रू के सदस्य थे वे सभी ग्रीक फॉर्म नामक रेस्टोरेंट के ऊपर डिनर पार्टी में गए। डिनर पार्टी के दौरान यह व्यक्ति आरोपी सिद्धार्थ उर्फ पुष्पराज जो इस क्रू का सदस्य था और इस एड शूट जो जानकारी अनुसार इसी के द्वारा इसका कार्य लिया गया था या इसी की कंपनी के द्वारा यह कार्य लिया गया था। यह लड़का
इस लड़की को उस रेस्टोरेंट से स्मोक करने के बहाने अपने गाड़ी में ले गया और गाड़ी में ले जाने के दौरान इसके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और तत्पश्चात ये उसके साथ उसे अपने कमरे पर ले गया, जो न्यू भोपालपुरा में इसने अपना कमरा ले रखा था। वहाँ पर जैसा महिला ने आरोप लगाया, इस युवक द्वारा उसके साथ फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया। आज अर्ली मॉर्निंग इस युवक को, जो चित्तौड़ गंगरार का रहने वाला है, उसे हमने चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने इस अपराध को कबूल किया है और इसे इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के पश्चात इस प्रकरण में हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्योंकि घटना संवेदनशील है, गंभीर है, एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई है। हम लगभग 7 दिन के अंदर इस संपूर्ण प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश करेंगे और इसे केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और यथासंभव इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कराएंगे। आरोपी और पीड़िता के बीच पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि दोनों पूर्व से कभी संपर्क में रहे हैं, लेकिन ये फिर भी जांच और अनुसंधान का विषय। आरोपी को अभी आज ही हमने गिरफ्तार किया। ये सभी तथ्य जांच के विषय हैं। सर्वाइवर की कंडीशन कैसी है? फिर ठीक है, उनका कल ही मेडिकल करा दिया गया था। जाहिराना कोई ऐसी कोई इंजरी या कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया में कब आए? सॉरी, इंडिया में कब आए? वो अभी इनके पासपोर्ट से और दूसरी डिटेल लेंगे, बट प्रारंभिक जानकारी अनुसार ये लगभग लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं और इसी तरह के एड शूट्स वो पहले भी करती रही हैं और उनके माँ बाप भी हिंदुस्तान से लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं और राजस्थान में उनका पहले भी मूवमेंट रहा है। सर, ये इवेंट कंपनी कौन सी है? देखिए, जो आरोपी की कंपनी है वो तो है उदयपुर कास्टिंग कॉल। हाँ, जो आरोपी और इनके एक सहयोगी हैं, उनकी दोनों की एक कंपनी है जिनके द्वारा ये एड शूट लिया गया था। उसके साथ साथ जोधपुर के कुछ और सहयोगी कंपनियां थी जो और इस एड शूट के लिए आवश्यक सहायताएं उपलब्ध कराती थी। इसमें और भी किसी का? देखिए, प्रारंभिक जांच में तो महिला के द्वारा इसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, बट अब चूंकि आरोपी आया है तो यह संपूर्ण घटनाक्रम और क्या रहा, इस संपूर्ण घटनाक्रम की हम इससे पूछताछ के बाद तस्दीक करेंगे। सर, एक भी जानकारी दी कि ये महिला जो पुलिस मीडिया के यहाँ आई थी और काम भी कर रही थी इस इवेंट कंपनी के साथ, उसके मुझे भी कोई जानकारी? देखिए, मैंने जैसे भी कहा आपको कि यह महिला लंबे समय से यहाँ है, दिल्ली में रही हैं और इस इवेंट कंपनी से संपर्क में रही हैं और भी दूसरे शूट्स में ये सम्मिलित रही हैं। लेकिन डिटेल जानकारी अभी हम आरोपी से पूछताछ और जो क्रू वेयरनेस सदस्य हैं, जो प्रोडक्शन हाउस के दूसरे सदस्य हैं, उनसे पूछताछ के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। सर, इस आरोपी के बारे में पहले कोई शिकायत मिली हो इस तरह की शूटिंग के दौरान या नहीं? ऐसा भी आदि नहीं, ऐसा कभी रिकॉर्ड्स जो भीलवाड़ा में अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो हमारी जानकारी में नहीं आएगा, बट फिर भी जो आप बता रहे हैं इसकी हम अनुसंधान के दौरान तस्दीक करेंगे। এটা মানাছে সাইডে বি হর্নবিল টিভি।